आईजीएसटी का बिल था, उस पर आईजीएसटी लगा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं ये तो तेरा ट्रक घुमा घुमू के ले गया, ये लोकल सेल थी। नाउ व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट से? Supreme Court entertained this, issued notice, notwithstanding that there was a specific capital provision under 1071. The statutory remedy so and so. Instead of availing remedy, respondent instituted a petition under Article 2 to 6. Although the existence of remedy is not an absolute bar to the maintenance of a writ petition so and so, but a writ petition can be entertained in certain exceptional circumstances. In the present case, none of these exceptions was established. Further, there was no violation of the principles of natural justice. When I told you under 3 circumstances, notwithstanding where you want to avoid a 10% deposit, where order is against a Supreme Court judgment, order is without jurisdiction, and order has not given you any opportunity. I'm talking of assessments where demand is created, not other orders. So you can approach High Court under Article 2 to 6, notwithstanding that there is a onerous condition of depositing 10% as a mandatory deposit. An assessment of facts would have to be carried out by the appellate authority. The High Court has, while doing the exercise, proceeded on the basis of surmises. The impugned order of the High Court is set aside. The petition filed by the respondent shall stand dismissed. However, this shall not preclude the respondent from taking a recourse to appropriate remedies which are available in terms of evidence, so and so. So, in this case, also, while disposing of the said case that 107 appeal is pending, as is some other case where they pass remarks, we'll have that case later on. So, there also they follow 107. Next, Siddhi Vinayak Trading Company. I don't know how many of you have read this case. It's not very publicized case, but this is a very important case. Interpreting section 74. GST, इन्होंने का पॉइंट ये था, देखो जी हमारे तो रेड भी कर रहे हैं और हमारे 74 की प्रोसीडिंग भी चला रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों कैसे ऑन हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में नक्शल बोला कि बोथ रेमेडीज, बोथ एक्शंस आर फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर्स and they are independent exercises. We will not like to interfere. There is no clash of conflict between section 65 audit and section 74 demand recovery. That is, dono parallel proceedings can continue against you. Let's read this. 2 paragraphs only. Petitioner contention that once a notice of summons had been issued by Central Select Authority, adjudication under section 74 could not have been made by the state authority. High Court held the summons had been issued while initiating inquiry under section 70 of CGST Act, which is a judicial proceeding, whereas for determination of tax and penalty, this under section 71, according to procedure prescribed in section 74, as the proceedings for determination and levy of tax and penalty had been initiated by state tax authority, the court does not find substance in the challenge to the jurisdiction of state tax authority to pass order for determination of tax and penalty to levy so and so. The initiation of proceeding for imposition of tax and penalty of section 74 GA and the inquiry into section was independent. Both can continue. हमारे में कई बार में लोग कहते हैं जो कहते हैं, but Supreme Court says you can do it. It's under GST law only, but independent. The been dismissed Supreme Court, since an appeal lies under section 107 must be that against the order of assessment so and so, the not inclined to entertain this SLP under section 1. उन्होंने बोला कि बाकी जाओ अपील में जाओ, हम नहीं एंटरटेन करेंगे. तो 3 चीजें इसमें हुई कि सेक्शन 70 का समन भी था, 74 की डिमांड रिकवरी भी चल रही थी. उन्होंने कहा समन का कंटिन्यू, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू, इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, और 74 डिमांड रिकवरी है. यहां नहीं, सेक्शन आर्टिकल 136 में नहीं लेंगे आपको, आप 107 में अपील करिए. राइट, नेक्स्ट. तो दोनों प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर सकती हैं. एक और जजमेंट है इसके ऊपर भी, ये इंटरेस्ट के ऊपर है कि विदाउट ए शो कॉज नोटिस इंटरेस्ट कैन नॉट बी लेविड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50. द ओनली अमेंडमेंट इज अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन. अवेलमेंट और वर्ड को अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन कर दिया गया अमेंडमेंट से, लेकिन विदाउट शो कॉज नोटिस नो इंटरेस्ट कैन बी लेविड. अगर आपने पैसे देने हैं, आपने अगर एडमिट टैक्स भी नहीं दिया है, तब भी इंटरेस्ट का शो कॉज नोटिस देना होगा. ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट थी, एलसी इंफ्रा, which went to Supreme Court, and they said, no, this is mandatory. Next, Falcon Enterprises. Let's read section 129, 130. I think I need to tell you something more on this. हमने कभी लंबा चौड़ा पढ़ा नहीं उसको, नेक्स्ट सेशन में इसको हम जरूर करेंगे.
129 deals with detention, seizure and release of goods and conveyance in transit. Section 67 deals with seizure and detention at your premises. 129 deals with in transit. जब आपके गुड्स चल रहे हैं आपको डिटेन सीजर जो भी कर सकते हैं जी. तो 67 के से कोई रिलेवेंस नहीं है. ये बेसिकली वो ट्रांसपोर्टर्स है. एंड व्हाट डज सेक्शन 130 सेज? कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी. दोनों का पर्पस एक है लेकिन दोनों का स्कोप बिल्कुल अलग अलग है. सेक्शन 129 में अगर आपके ट्रक चल रहे हैं, कन्वेंस चल रहे हैं, वो गुड्स को भी सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, कन्वेंस को भी कर सकते हैं. 130 उसका कन्फिस्केशन कब होगा? तो where 129 ends, 130 starts. And since you have failed to comply with the notices of order, whatever given to you, we confiscate the goods and we can sell them. A confiscation is a process whereby the authorities, by using force of law, sell the property owned by you. Therefore, Article 300 capital A will not be applicable. They can deprive you of your property because the appropriate lawmakers have allowed it to happen. They can do it. So confiscation में supposing आपकी 10 लाख की liability थी, आपका एक ट्रक था, वो ट्रक बिका 4 लाख का, 6 लाख अभी आपको और देने. So confiscation proceeding does not end your ordeal unless your property was more value than the tax liability. If your tax liability was more than the consideration this asset as fetched, you will have to pay more. So this was the case under section 130. Falcon is the first judgment where they say you have to follow only appeal remedy, no high court, no Supreme Court. Let's read this. Demand of tax and penalty, appeal against order of confiscated goods, challenge to the High Court order rejecting the writ petition by holding that the order passed under section 130 CG Act is applicable under section 107 of CGST Act. So again remember 107, any order, any adjudication order or decision passed by proper officer under the Act is appealable in 71 or 102 and consequentially in 1112 before tribunal. Section 1, petitioner contend that the appeal in section 17 of the Act is not efficacious remedy. कहते मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो गया, मेरा सब कन्फिस्केट कर लिया, मेरा सब बर्बाद कर दिया. वकील हम भी बोलते हैं ना मर जाए जी के ये हो गया, कहते हैं no nothing doing. Held section 1706 provides that an appeal shall not be entertained unless the appellant pays the indemnity tax of 10% and a sum equal to 10% of the remaining amount so and so. Section 108 provides that an appeal lies. The petitioner is at liberty to raise the issues before the appellate authority. The special petition is dismissed. They say for remedy only, don't jump to courts, high courts. Now, इस judgment की why are we reading this? We know this law. बहुत सारी पढ़ा हमने इसको. Supposing आपने एक 22 को ये SLP डाली थी, direct to Supreme Court on certain grounds. वो 2 साल के बाद इसको dispose of करते हैं. And they pass this order, the petitioner has liberty to raise all issues before the appellate authority. They are not given leave to you file the appeal. They have not extended time. That is Article 14. If you are pursuing a remedy before a wrong forum, the time taken before that forum can be automatically excluded for the purpose of limitation under section 107. That is why these kind of orders may not be required. But provided you are seeking the same relief in appeal, what you are seeking here. If the relief is different, then you can have little bit there. You can be in trouble. But otherwise, whatever time you take, अगर ऐसा लॉ होता कि लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं करता तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही नहीं. वो 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट करने वाला नहीं इसका. राइट? दैट्स व्हाई वी टुक द जजमेंट कि अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो उसका जो जितना टाइम, अगर आपने ये 3 महीने के अंदर एसएलपी फाइल की थी और ये 3 साल के बाद हुआ और आपके 10 दिन बाकी थे, इस जजमेंट के बाद भी आपको 10 दिन मिलेंगे. सिंपली यू हैव टू राइट कार्ड appealed before a Supreme Court for seeking same relief. Relief is denied for want of jurisdiction. But now court says I have no jurisdiction. You go to appeal. With this, we don't have jurisdiction to entertain you here. Law provides an appellate remedy. Therefore, we are without jurisdiction. You go under 1076 और अपनी appeal file करो, 10% जमा कराओ. Next. Radhakrishnan is another judgment by Dr. Chandrachud, which has created a revolution in GST.
It's a revolutionary judgment. Judgment of 82 pages. इसमें 4 की इशू थे. इसमें वो सब झगड़े थे जो फेक इनवाइसिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, चोरी चकारी, इनपुट रॉन्ग राइट, व्हाटएवर, ऑल क्लेम्स वर देयर. और जेन्युइनली वो चोर बन थे, सारे स्टील वाले सब चोर थे वो. उसको चलते हुए उन्होंने सेक्शन 83 का ऑर्डर पास किया और पास एज पर लॉ. ज्वाइंट कमिश्नर की अथॉरिटी से हुआ, कमिश्नर के ओपिनियन के बाद हुआ, कमिश्नर की ओपिनियन फाइल पर आई और वो हैंड इट फाइल्स आर पार्ट ऑफ द जजमेंट. नंबर 3, the assessee went to high court. High court said no, you go to appeal 107. फैल्कन को कोट करूंगा 107 में जाओ. Number 4, even when 74 subsection 9 proceedings were over, assessment order had been passed, still section 83 prisoner attachment order was not opened. ये चारों विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने थे. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जगह लिखा कि ये जो 83 की पावर है, इट इज ए ड्रैकोनियन पावर, वेयर ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट यू अटैच बैंक अकाउंट्स ऑफ पीपल, अटैच प्रॉपर्टीज, कैश, डेटर, क्रेडिटर, जो भी आप अटैच कर देते हो. दिस इज ड्रैकोनियन पावर एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल टू यूज इट. It will stop your business. Rare cases they should be used. और सेक्शन 83 को उन्होंने इंटरप्रेट किया कि जो कमिश्नर इज अंडर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन. So remember that phrase, procedure established by law, which we did day before. So that again comes into handy here. What was the procedure laid down? That is rule 159 sub rule 5. Next time I'll give you the rules book also. It's under printing. उन्होंने बोला कि आपको ये रूल फॉलो करना था. जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये किया क्या है. पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या किया, दे पास स्ट्रिक्चर्स अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट. उन्होंने बोला कि इफ दिस ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ ए कमिश्नर, तो कमिश्नर की अपील कहां जाएगी, एडिशनल कमिश्नर को? नो, इट गो टू ट्रिब्यूनल. देयर नो ट्रिब्यूनल, so they have come only go to high court. So high court didn't, they said high court did not appreciate the legal position at all. High court should have entertained the under article 2 to 6. Number 2, उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 83 to rule 159 सब रूल 5, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बिफोर यू टेक दिस स्टेप ऑफ बीइंग ए ड्राकुला, किसी का आप खून पीना शुरू कर दो, फॉलो द प्रोसीजर. अब प्रोसीजर ये था कि आपको उसको नोटिस देना कि भाई मेरे पास ये, मेरी ओपिनियन ये है कि तुम ये हेराफेरी कर रहे हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हैं. You have to not only take his reply on record, also physically, personally hear him, call him for hearing. The physical hearing was critical. इन्होंने पॉइंट लिया था, रिप्लाई बने से देख लिया, कहता व्हाट रिप्लाई, इट रिक्वायर्ड अ पर्सनल हियरिंग. हमने बुलाया था उसको, उसका वकील आता, सीए आता, वो खुद आता, जो भी करता, उसको सुनने के बाद आपको ओपिनियन लगानी थी कि आपको बैंक अकाउंट अटैच करना है. कहता सपोज यू कहता है मैं टैक्स देता हूं, तो किस लिए बैंक अकाउंट अटैच करना था आपने, व्हाई डिड यू डू इट? तो उन्होंने जब कमिश्नर की फाइल पढ़ी, उन्होंने बोला कि देयर इज नो ओपिनियन एट ऑल बाय द कमिश्नर एक्सेप्ट साइनिंग द जॉइंट कमिश्नर वर्बटम. Opinion has to be of the commissioner, not of the joint commissioner. Joint commissioner was given power to attach. That is, joint commissioner was to carry a procedure. जो फॉर्म भर के उसका बैंक अकाउंट अटैच करना था. It was not the opinion of the joint commissioner. You were to form the opinion after following this particular procedure. फिर उन्होंने सेक्शन 83(1) को इंटरप्रेट किया कि अगर 74 का ऑर्डर ही पास हो गया, तो now there is no pending proceeding. खत्म हो गया ना. The whole proceeding has culminated into a 74 subsection 9 demand order. Therefore, where is the question of keeping the bank account still attached? On these 4 issues, High Court gave a beautiful piece of legislation. Judges ने बहुत अच्छी, is one of the best judgments of GST after Bharti Airtel, which I think. Let's read this. Spend 10 minutes on this. Let's see section 83 first. Forget amended or without amendment. The law remains same. Where after the initiation of proceeding under chapter 10, ये amended law है, or so and so, the commissioner is of the opinion this power cannot be delegated. Commissioner has to form the opinion. Even if commissioner delegates, Supreme Court notice, no, he had no power to delegate this power. It's commissioner
law mandates only commissioner has to, not authorized person, not delegated, that for the purpose of protecting the interest of government revenue. अब किस लिए आप अटैचमेंट करना है? To protect the interest of government revenue. कहते हैं this finding has to come on record based on some reasons कि how is the government revenue being compromised. There they also introduced a theory of proportion कि आपका आपके हिसाब से डिमांड तो 10 लाख की निकलती है, आपने उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी. Under what law? So what was the government revenue going to lose 10 lakh rupees? आपने उसकी बिल्डिंग अटैच करके रख दी. जैसे नो दिस इज नॉट अलाउड. जितना आपका डिमांड है उसी हद तक आपको किसी चीज को अटैच कर, उससे ज्यादा नहीं. अगर आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए हैं, देने आपने 10 लाख हैं, तो पूरा बैंक अटैच कर दिया आपने. तो 10 लाख रुपीज अदरवाइज अलाउ द बैंक टू ऑपरेट इट. ठीक है, 10 लाख आपके कवर हो गए. There they went into these kind of questions, and based on this they castigated Himachal Pradesh High Court. They virtually sacked commissioner जो ने follow किया procedure, except that he was not sacked, but remarks both against थे उसके. And this came to be a Bible on section 83. This judgment was before the amendment took place regarding extension of scope, but the otherwise law remains same, except के अब जो 1 साल का झगड़ा वगड़ा जो बड़े हो गए. Let's read this. Provisional attachment, delegation authority under CGST Act. Whether the orders of provisional attachment issued by Joint Commissioner against the appellant are in consonance with conditions stipulated in section 83. Now, supposing as a professional you have a case कि जहां किसी का बैंक अकाउंट अटैच हो गया और उसका आईटीसी ब्लॉक कर दिया. द सिमिलर लाइंस हैं दोनों. हाईकोर्ट ने भी इसी रीजनिंग पे सारे वो आईटीसी ब्लॉक खत्म किए कि रीजन क्या है, किस लिए किया आपने. एक मेल पे लिख दिया आईटीसी ब्लॉक, बात खत्म. हम फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, डंडा चलाएंगे, आपका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे. तो यू हैव टू सी कि वेदर द प्रोसीजर लेड डाउन, द लॉ लेड डाउन इन राधाकृष्णन वाज फॉलोड इन दैट केस और नॉट. तो पहला आपका जो आपका लॉयर्स नोट होगा अपनी कॉपी में, आपका ये लिखेंगे 83 वाज फॉलोड एज पर राधाकृष्णन और नॉट. Whether writ petition challenging the orders of provisional attachment was maintained on 26 of the Constitution before the High Court. The High Court has erred. This is Supreme Court finding. It's a Supreme Court language. In dismissing writ petition on the ground that it was not maintainable, the power to order a provisional attachment of the property of taxable person. Again, you have to be very careful कि जो वर्ड लिखे गए हैं, अगर आपका पर्सन टैक्सेबल नहीं है तो 83 is not applicable. Supposing you were dealing with only grains, other day we were discussing, आप खाली गेहूं बेचते हैं, आपका बैंक अकाउंट टैक्स नहीं हो सकता, क्या यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन. उसको फाइंडिंग में आने के लिए क्या देखना है आपको? 22, 23, 24. कहीं आप यहां फंसते तो नहीं है. इफ यू आर डीलिंग इन एक्सक्लूसिवली grains, then section 83 is not applicable to you. Tax including a bank account is a draconian in nature, and the conditions which are prescribed by the statute for a valid exercise power must be strictly fulfilled. The exercise of power for a provisional judgment must be preceded by the formation of an opinion by the commissioner that is necessary so to do for the purpose of protecting the interests of government revenue. So what does commissioner have to do? जो भी उसके सामने फैक्ट्स लाए गए उसके बेस पे उसका ओपिनियन बनानी है कि नहीं भाई ये तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कंप्रोमाइज हो रहा है, एंड देयरफॉर आई मस्ट पास ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट. ये उसको फाइंडिंग आपने ऑर्डर में देनी है. फाइंडिंग कैन बी टोटली इररिलेवेंट, टोटली रॉन्ग, इट टोटली कैन बी जस्ट फेक, बट दिस फाइंडिंग मस्ट कम ऑन रिकॉर्ड. वो जस्टिफाइड है या नहीं, द कोर्ट विल नॉट गो एट दैट स्टेज. कोर्ट विल गो थ्रू एंड मेरिट व्हेन दे हियर द मैटर. बट फॉर पासिंग 83 ऑर्डर दे हैज टू सिंपली गिव अ फाइंडिंग कि ये आप कर सकते थे और ये मेरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है. ये ओपिनियन कमिश्नर को फॉर्म करनी. नेक्स्ट, the formation of opinion commissioner secretary must be based on tangible material. क्या tangible material हो सकते हैं? कहते हैं जी इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा का फेक है. कैसे फेक है? तभी वो उन पार्टियों के नाम लिखे जाते हैं, आपने इस्तेमाल खरीदा, एक चोर है, ये है, वो है. तो some evidence which can be somewhere at the initial stage can be relied upon, but it has to come on record. ये नहीं होता कि हमने इंक्वायरी की, आप सारे 14 डील करते हो. दिस इज नो एविडेंस. सपोजिंग एक पार्टी है जो एक ट्रेड को सब सप्लाई करती है, आप हो सकता है उस पार्टी से आपने माल खरीदते ही नहीं, तो आपको लागू नहीं होती. देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट सेज
being necessity of ordering a provisional attachment for the permanent revenue. In the facts of the present case, there was a clear non-application of mind by the Joint Commissioner. This is stricture passed. Joint Commissioner to the Provision 83, rendering the provisional attachment illegal. Under Provisional Rule 195, the person whose property is attached is entitled to dual safeguards of procedure. Rules lay down procedure to substantiate the benefit given in the act, given or power given under the act. आपको रूल को फॉलो करना है. They lay down the procedure established by law. Dual procedure safeguards and an entitlement to submit objections on the ground that the property was or is not liable to attachment and an opportunity of being heard. दोनों आपको जवाब मांगना है और दूसरा opportunity of being heard is a must. There has been a breach of mandatory requirement of 59(5) and the commissioner was clearly misconceived in law in coming to conclusion that he had a discretion on whether or not to grant opportunity of being heard. ना बोला जी रिप्लाई देख लिया हमने उनका और कौन सी opportunity कहते हैं no. You can't decide. If law is giving a right to a taxpayer, taxable person, you must give him that right. Hear him out. So whenever you have this case where these things are violated, write a letter to commissioner first. He is the head of department. कि ये law कहता है आपके बंदे ने ये किया, if you not don't do it, we'll take you to court. This is a fit case to High Court where Section 107 will not be invoked by any High Court because this without jurisdiction. ये आपने jurisdictional issue follow ही नहीं किया आपने. Next. There has been a breach of mandatory requirement of 159 and the commissioner was clearly misreading in law, coming to conclusion that he had a discretion of the commissioner duty bound. No, पैरा नहीं है. तीन लाइन से add है. The commissioner duty bound to deal with the objection to the attachment by passing a reasoned order which must be communicated to the taxable person since property is attached. Before he issues a provisional attachment order to the bank or any other property to the registrar, he must pass, after hearing the objections and hearing the person of earth and giving opportunity being heard, he must pass an order. I am satisfied because your bank account should be attached. अब ये हो सकता है कि इन बीच में सारे पैसे वहां निकाल ले. इस केस में सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है. फिर राहुल कक्कर बोल गया सारे पैसे पहले निकालना, बाकी बाद में देखते हैं, इसको पैसे निकाल दे तो अपना, फिर जो करना करते रहे, देख लेंगे हम. A final order having been passed in 74(9), the proceedings under 74 are no longer pending. So what 83 talks when proceedings are pending? जब एक ऑर्डर आपने पास कर दिया, how can the proceeding be pending? It's over. What that proper officer जिसने 74 की proceeding initiate की थी, उसने 74(9) में डिमांड ऑर्डर निकाल दिया. कहता है no, it's not pending. Then how are you holding a bank account? The appellant having filed an appeal against order 7, the provision of subsection 1 come into operation in regard to the payment of tax and stay on the recovery of balance as stipulated in those. 10 रन जमा करा दिया, स्टे हो गया, बात खत्म होगी. नेक्स्ट एक और चाहिए नहीं. So Radhakrishnan laid down 4 propositions of law. As long as there is no tribunal, 83 orders have to go to High Court. There can be no appeal filed. A commissioner order cannot be appealed before a lower authority. Number 2, जब भी आप 83 का ऑर्डर आपको अटैचमेंट हो, इन द प्री अमेंडेड और द अमेंडेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 83, आपको देखना है क्या आपको रूल 59 सब रूल 5 के नोटिस दिया गया, आपको बुलाया गया और आपको सुना गया, और क्या कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया क्या वो ऑर्डर आपको दिया गया. उसी ऑर्डर के बाद बैंक अकाउंट आपका अटैच हो सकता है. एंड देयर इज नो पावर टू कमिश्नर टू पास एनी इंटरिम ऑर्डर कि अभी इन द मीन टाइम तेरा बैंक अकाउंट अटैच हम करते हैं. नो, अटैचमेंट रेज ए प्रोविजनल. देयर कैन नॉट बी इंटरिम प्रोविजनल अटैचमेंट. लॉ टॉक्स ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट एंड High Court will hear you under 226 if you quote this judgment. ये जो कमिश्नर का ऑर्डर है, हमारे पास कोई अपील का फॉर्म नहीं है. There is no tribunal. Commissioner's appeal go to tribunal under 112, right? And lastly, इसमें मैंने ऊपर रखा नहीं है कि the attachment has to be in proportion to the alleged demand. Theory of proportionality, which they have explained in this 6-7 pages that is wrote. What is the theory of proportion? कि कितना आप अटैचमेंट कर सकते हैं. अब ये कह सकते हैं जी कि हमने कोई डिमांड तो नहीं निकाली है, पता नहीं कितनी डिमांड निकलेगी, लेकिन जो रिपोर्ट बनाई जाती है कि इट्स लाइकली टैक्स इवेजन, वो रिपोर्ट तो बनती. तो अटैचमेंट कैन नॉट बी मोर देन दैट. अब इस केस में
It's a simple case, but why I took it, it's a history to this case. अब इन्होंने 3 सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की सर्च एंड सीजर में, 67(2) सर्च एंड सीजर, 74(5) you know that, 67(6) search and seizure again. Petition seeking provisional release of finished goods under subsidiary of second upon furnishing a bank guarantee. Revenue insistence for additional bank guarantee. उसने कहा जी बैंक गारंटी ले लो, हमारा माल रिलीज कर दो. सिंपल सी बात है, 67(6) में लिखा है, आपका राइट है. लेट्स रीड 67(6). Let's spend 1 more minute on this. The goods so seized in subsection 2 shall be released. The word used is shall be released on a provisional basis upon execution of a bond and furnishing a security in such manner or such quantum, respectively, as may be prescribed, or on payment of applicable tax, interest, and penalty payable as the case may be. Word is or. Or. It's a discussion with the officer whether he wants a cash payment or a guarantee kind of a thing. Petition seeking provisional release of finished goods under so and so upon furnishing bank guarantee, revenue insistence for additional bank guarantee. High Court held rule under Rule 140 seized the seized goods may be released on provisional basis upon execution of a bond for the value of goods and furnishing of security in the form of bank guarantee equivalent to the amount of so and so. The respondents are duly about to provisionally release the goods with requirements. कहते हैं कि requirement satisfy होती हैं, you can ask no further questions. 67(6) में यही दो रीजन है, बैंक गारंटी या कैश. और बैंक गारंटी दे रहे हैं, आपको ऑप्शन दे दिया, आपको दिया रिलीज करो. तो इस केस के लिए भी पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. आप इमेजिन करो कि गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, हमें एडिशनल बैंक गारंटी दो. तो दिस इज द काइंड ऑफ लिटिगेशन फेस इन जीएसटी. इट्स वेरी शॉकिंग. गुड्स रिलीज करने थे प्रोविजनल. In any way, you cannot keep more than 6 months or whatever the period. नहीं किए इन्होंने. हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट में आए. और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर ऑर्डर कुछ नहीं किया. उन्हें बस यही लिखा लास्ट में ऑर्डर, ये ऑर्डर की कॉपी है. आर ड्यूटी बाउंड टू डू व्हाट? They should have ordered to release the goods. Goods were released of course later, but the order was still very silent on this issue. This shows कि जो GST law था, even at Supreme Court level, there were some gray areas. They did not know what is the scheme of the act. Next. बड़ा करो जी इसको. मैं रात को 1 बजे तो घर आया था. 3 घंटे में बना हुआ था मेरे पास पहले. फिर मैं कहा तो तेरे को भेजता हूँ, ठीक करेगा तू. कोई बात नहीं, क्या हो, कोई आफत नहीं आ रही. Now, this is a very important case. I'm sure most of you would not have read this case till today. ये कहते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर में जो आप अपनी फसल की प्रोसेसिंग करते हैं, उसका जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जस्ट पिक अप सेक्शन 231, 2 सबसेक्शन 31. हेलो, section 2 subsection 31. Just read the opening lines. This judgment is on consideration. 31, I think it's 31. Yeah, 31. Consideration related to supply of goods or services or both includes any payment made or to be made, whether in money or otherwise. We will stop here. Right? This judgment interprets this phrase. इसमें क्या एग्रीमेंट था? उसने कहा जी ये मेरा गेहूं शेहूं आप सारा मिलिंग कर दो जॉब वर्क बेसिस पर, आपको 5% देंगे, और जो भी इसका कबाड़ा निकलेगा, जो बिकता है, जो राइस ब्रान ऑयल बनता है, वो इन्हीं की हस्क से बनता है, वो भी आपका. डैडीज अगर उन्होंने 100 रुपए का माल दिया उसको, हो सकता है उसको 80 रुपए का वापस मिला, 20 रुपए उसका कंसिडरेशन हुआ, और वो मानता है 5% पे तो जीएसटी लगना है. बट द गवर्नमेंट सेड नो, what about the material which you took as a byproduct of this milling the husk or grain or whatever? हमें उस पे भी टैक्स चाहिए. केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट.
Let's understand what did Supreme Court say. Still the issue is open. Validity of levy of GST on the value of broken rice bran and husk obtained by custom milling of paddy, which were allowed to be retained by the petitioner in addition to the milling charges as compensation. 5% और जो सारी बाई प्रोडक्ट पे तुम्हारी तुम बेच लो, अपने पैसे कमा लो. Challenge to assessment or levying GST on the estimated byproducts value, treating such byproducts as part of the consideration of milling. Whether byproduct assume the character of consideration. So in money or otherwise? Consideration was in money or otherwise. So what is the meaning of or otherwise? Otherwise is if the consideration can be otherwise other than money also. And this was a clear case of otherwise than money, but Supreme Court did not jump the way we are jumping. For the purpose of levy, taxability of compensation to replenish the shortfall. Writ fall is allowed, writ is allowed, and the impact assembly so far as it relates to levy of GST or value of byproducts, broken rice bran and so and so as part of the value so and so is set aside. Answered in favor of the petitioner, revenue appeal challenging High Court order, Supreme Court. It is submitted by the revenue that the value of the broken rice bran and husk. This is the way you should drop your whenever you study. If you know how to write cut paste from computer, see the main issue. बाकी अब सारा पढ़ो, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, बट इसका मेन इश्यू क्या था? क्या ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी, इज इट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन? अब वी नो कंसिडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. तो अगर आपको पता है कंसिडरेशन वर्ड डिफाइंड है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हैव एनी अदर डेफिनेशन एक्सेप्ट व्हाट इज डिफाइंड. उसी को इंटरप्रेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट. तो चाहे 25 पेज की जजमेंट हो, आप उसको 2 पेज में, आधे पेज में ला सकते हो. आपको सिर्फ इश्यू देखना है कि इश्यू जहां हुआ है. जब कोई केस आएगा उसको लंबा पढ़ो, जो मर्जी करो. सारी अपील आपकी इस केस पे बन सकती है 5 मिनट में. समझिए आपके पास एक केस आया जैसा अपील है, आपका सबको तैयार है ना? इसमें सेक्शन भी है, लॉ भी है, जजमेंट्स भी है, इंग्लिश भी लिखी हुई है, क्या ग्राउंड दिए गए, सारे कापी माते कर लो, आप डाल दो उसमें. And since these grounds have been tested by Supreme Court in favor of the petitioner, it's all the more reason just cut paste copy and fill the ground of appeal. But you have to still read the judgment. That's more important. It relates to levy of GST and value broken rice, bran, rice, and platinum as part of the consideration paid to petitioner for filing paddy. Supreme Court. It is submitted by the revenue that the value of broken rice, bran, and husk is liable to be taken into account in determining the consideration which is payable in terms of Section 231 of CGST Act, and the High Court issue notice. Supreme Court has not yet decided. Now the question is, why does it not decide such a simple matter? Because such issues are of national importance. We are an agro-based country. So they have to, it may be referred to even a larger bench such a small issue. तो बहुत बड़ा वैल्यू है. कंसिडरेशन 5% है, उसकी वैल्यू 15% हो सकती है. और ये 5% तो वो है जो उसको देना है, वो 15% विल बी सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, और उनका टैक्स 18% है, 18% टैक्स लगेगा उसके ऊपर. लेकिन अर्लियर रिजीम्स में द केस वाज अगेंस्ट द पिटिशनर्स, इट वाज टैक्स्ड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. अब हमारे हैं इन मनी और अदरवाइज, if this sale of byproducts is an essential part of the contract, that is, we can read this as a total package 5% plus this, then this will be taxed. Supreme Court only has to go through this particular contractual arrangement. कितने की बिकी, उसने कितने के बेची,